My dear student, today we will discuss a subject that is income tax. Income tax have some important definitions under which we can be able to explain the concepts of income, income tax, and the income tax is liable to be paid on persons, and there are different kinds of persons, and there are a concept there are so many concepts like assessee, previous year, assessment year, somewhere financial year, and then concept of income, and there may be total income or gross total income, casual income, or assessee in default, or there may be different rates of income tax which are applicable during the current assessment year or the financial year which has already been the previous year before the assessment year. Today we will start from important definition, that is income. Under Income Tax Act 1961, there is a concept of income, and this concept comes under section 2 subsection 24. The income is one of the important term of Income Tax Act, as income tax is chargeable or charged on income of a person. The term income has not been properly defined in the Income Tax Act, except that it states as to what is included in income, what kinds of incomes are included to be chargeable under Income Tax Act 1961. There is no proper definition of income in Income Tax Act. Under this section, income includes are as under. First one is profits and gains. If a person have different kinds of bodies or individuals which can be defined as person under Income Tax Act. An individual may be person, that is an natural person, and a artificial person can be a person to be treated as in Indian Income Tax Act 1961 for the purpose of calculation of income or computation of income and gross total income of that particular person, or you may call it an assessee. An assessee is a person who is to be liable pay tax on his income during the current assessment year on his previous year income. For example, this is the current assessment year 2020-21, and the previous year for this assessment year is based on the financial year which start from the 1st April 2019 to 31st March 20 or 2020, you may call it. The concept for income includes different forms of income from different sources, and under section 2 of 24 of Indian Income Tax Act, the discussion is very important for income tax purposes. The first one is profits and gains, which I already stated that income can be from a source of profits or gains, or it may be from a business, maybe from a profession, or maybe for any economic activity or economic operation or trading, or maybe marketing, or maybe any manufacturing process and selling it to the customer, then getting some business from out of it by selling it and getting some margin, getting some gain on it, economic activity. The second one is there may be dividend,
Dividend is a form of income which an assessee may earn through different kinds of trading practices in share market, by selling and purchasing or buying and selling different forms of equity shares, maybe commodities, maybe currency, or maybe commodities. There are different forms of marketing or trading in stock exchanges, or that kind of gain from that economic activity is called dividend, or profit out of selling securities. The dividend may be another form of income for income tax purposes or chargeable under Income Tax Act. The third one is voluntary contribution received by a trust created by charitable or religious purposes. And there may be, secondly, by a scientific research association, or by games or sports of association or institutions, or any university or other education institutions, or any hospital or any other institution, or an electoral trust. This can be the different form of voluntary contribution. Then there may be fourth source of income, the value of any perquisites or profits in lieu of salary, taxable under the head salary. If a person is employed in any organization, any institution, whether it is government or public or private or semi-government, or any other private, maybe triple P, public-private partnership, or there may be different forms of organizations, whether it is an individual, whether it is a firm, whether it is a business or profession, or whether it is a company, maybe private or public company, or maybe a government company. So when a person is employed in any organization, there is a relationship between the employer and employee. If there is a relation of employer and employee, there is a consideration for salary. An employee work for the organization and get some salary by doing a particular job for specific time. So there is a scheduling of working, and there is a timing, there is a work, and there is a action, there is a use of physical and mental labor, or you can say intellectual labor. Then a person gets salary being an employee in the organization, and employer paid it out of his sources of income. That's why it is stated as under the head income of a person getting profits in lieu of salary, or in addition to, if some employee contribute to, in addition to salary, some persons get some commission, some get some share of profit by doing their extraordinary efforts in sale, or any different form of intellectual labor, that they get some remuneration, or they get some revenue, generate revenue, or in form of profit in lieu of salary. It means when a person being an employee gets some share of in the profit, or in form of commission, or in form of any kind of advantage of economic benefit or monetary benefit paid by the employer to his employee, that is called different forms of value of any perquisites or any profits in lieu of salary. Then there is another form of special allowances. If any special allowance or benefit specially granted to the assessee to meet his expenses wholly, necessarily, or exclusively for performance of his duties. If a person is in the authoritarian positions, or a person is at higher level authority of decision making, being a employer, being a employee in the office of employer, then there is a need for some kind of advantage to perform his duty. There may be some special benefits, special allowances that a person gets to perform his duties, like some purchases like car, motorcycle, vehicle,
or some sweeper, gardener, or security guards, or there may be different forms of perquisites or benefits in form of to perform his duty. There may be bungalow, there may be car, there may be a particular motor vehicle, special motor vehicle, or there may be some guards, there may be security, there may be peons, or there may be watchmen, there may be gardener, or there may be different forms of economic benefit given to the employee on behalf of employer to meet his cost of living. Maybe a expensive city like Mumbai, Calcutta, Madras, Ahmedabad, Lucknow, or metropolitan city may be there, or there may be a uh, city which has been declared by the Income Tax Act as a major city of the India, which have a very high cost of living. Then to increase cost of living, there is a city compensatory allowance, or city compensatory allowance is given to a special employee to meet his expenses to be living in a high cost of living society, or you may call it low cost of living index is very high in that particular city. That's why city compensatory allowance is given to that kind of employee. Then there may be different form of income in form of the value of any benefit or perquisites which is obtained by a representative assessee. Representative assessee means a person who is representative of a taxpayer or an assessee on behalf of a original employee or original assessee. Like an advocate may be the representative of an assessee, and if he gets some benefit or perquisites paid by the employer to his representative on behalf of his actual employee. Then there is a different form of income also, and is sum chargeable to income tax under the head business or profession. There are different forms of income which are chargeable under income tax. First one, income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, and income from other sources. There are 5 heads of income that majorly or forms different income sources, or there may be a different quality of income. In income tax there may be treatment of income or chargeable under income tax if whether it is a legal income or illegal income. But technically we will discuss here only the different legal income form of which a person gets to be taxed. The next form of income is any capital gains. As already discussed, in form of share market, there are different activities or different sale of commodities or sale of shares, sale of currencies, or different form of trading is going on in the share market or listed stock exchange, whether it is Bombay Stock Exchange BSE index and National Stock Exchange NSE Nifty in form of 50 shares top companies are listed in that particular index, and that index is calculated on the basis of 50 shares of a top companies, or maybe some highest profit making companies. That is treated as the major landmark for the other companies to achieve that kind of profitability in the share market. And that's why if a person or income taxpayer gets some income out of investment in shares or any kind of commodities or any kind of currency by buying and selling in through demat account, that is dematerialization account, online transaction is recorded in that particular account. That account is opened in a particular commercial bank, or that may be a public sector bank or maybe private sector bank, and that account is operate
operated by the assessee, and that's why there is a need for that kind of quality of assessment of income. What kind of income is gained by investment of capital in a company or share of a company, or any kind of income is getting sale through sale, or getting economic benefit out of it, that is capital gain. The profits and gains of a business or of insurance carried on by the mutual insurance company or cooperative society. So there may be profits and gains of a business of insurance, or maybe mutual insurance company, or maybe a cooperative society, that is also comes under a source of income. And then there is any winning from lotteries, crossword puzzles, races, including horse race, card games, and other games of any sort, or any gambling or betting of any form or nature of whatsoever. So these are the different forms of casual incomes. There may be from income from winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse race, and card games and other games of sort, or from gambling or betting of form or natural whatsoever. So what kind of casual income we are discussing here is, there may be a counting, there may be a circle, or there may be a round winning wheel. If we circulate that kind of wheel, and if we are getting that kind of number which we are supposed to, that kind of number is maybe a number for winning, that is a wheel winning number, or that kind may be a casual income, or that kind may be earn a contingent income from that kind of winning lotteries, or by purchasing a ticket of lottery, or by crossword puzzles in newspapers or anywhere in magazines. और there may be some races like horse race, और horse riding या horse race से जो income होती है उस पर शर्त लगाते हैं, बैटिंग लगाते हैं, तो बैटिंग से जो इनकम हो सकती है, और हॉर्स रेस से जो इनकम आएगी, और कार्ड गेम से जो इनकम आएगी, कार्ड प्लेइंग, that may be different form of casual incomes. So we will discussing different forms of income which are treated as income under Income Tax Act under section 2 subsection 24. Then there is a 12th item, any sum received by the assessee from his employees as contribution to any provident fund or superannuated fund or fund set up by under Employee State Insurance Act, or any other fund for the welfare of the employees. So there is a relation of employer and employee, and if an employee getting income from his employer, and that income is treated as the income of the employee paid by the employer, that may be in form of contribution, which we are discussing now. Any sum received by assessee from his employees contribution to his provident fund or superannuated funds, or there may be some contribution from employer, or some contribution may be from employee, and that like provident fund account is created, and provident fund में employer भी पे कर रहा है कुछ हिस्सा और इक्वल हिस्सा, और employees also deducting his income from salary and paying in that particular PF account. So any kind of contribution, or any kind of insurance contribution, insurance fund may be created for that particular purposes. For income tax gives some advantage if an employer paid in that account, so there is a particular percentage, in excess of that percentage income is taxable, or less than that or equal to than that, there may be exemption from income tax. We will discuss these rates later on. Any sum received by a key man insurance or under the key man insurance policy, including sum received by way of bonus on such policies,
तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय ए पर्सन on the life of another person who is or was an employee of the first person or connected in any manner with the business. So there may be different forms of insurance policies, and if that some received under a key man insurance policy, that is also treated as income under Income Tax Act. The profits and gains of any business of banking, including providing credit facilities carried out or carried on by a cooperative society with its employees. So that is also a form of income as profit or gains of business of banking. So it depends upon a person whether it is an individual, whether it is a partner of a firm or a firm is created as a form of business organization, or whether it is a company, whether it is a cooperative society, or whether it is a body of individual or association of person for computing the income on his current assessment year. For the current assessment year, from different source of income, whether it is income from salary, income from house property, income from business or profession, or income from capital gains, and income from other sources. By adding all these forms of sources of income, there is a gross total income of an assessee. And there may be different forms of income, like any consideration received for issuing shares and as exceeds the fair market value of the shares. कोई भी शेयर मार्केट में शेयर बेचने से फेस वैल्यू से ज़्यादा जो हम इनकम कमाते हैं फेस वैल्यू पे परचेज करके इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस से हम इनकम जनरेट करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट्स में जितना फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा मार्केट प्राइस होता जाएगा उतना जो गेन है वो, और टोटल सम गेन ऑफ डिविडेंड is credited in the account or demat account of the assessee or a person who is liable to pay tax. So there may be issuing shares or exceed the fair market value of share, और मार्केट वैल्यू आईपीओ से मार्केट वैल्यू में बेनिफिट लिया जा सकता है, या स्टॉक एक्सचेंज से भी हम इसकी इनकम को एप्रिसिएट कर सकते हैं फेस वैल्यू को। दैट्स वाई आईपीओ के जरिए इनकम कब होगी, जब हम मार्केट में शेयर को एक फेस वैल्यू से ज़्यादा पर बेचेंगे और या प्रीमियम पे बेचेंगे। तो आईपीओ में जब कोई शेयर्स प्रीमियम पे बेचा जाता है तो दैट काइंड ऑफ इनकम इज आल्सो कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और इट मे बी ए प्रमोटर और इट मे बी ए इंडिविजुअल हु इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। Then any sum of money received in advance in course of negotiation for the transfer of capital assets, or such negotiation fails or amount is forfeited. There may be benefit from losing the one side party or a contract, or that contract may be of a business, that contract may be of any form of commodities, buying and selling, or there may be a possibility of losing ownership in the shares by forfeiting his shares, a forfeited shares, or and getting some losing part of the investors in form of capital asset. There may be some income received in advance, that is also a part of income to a person or a company or any kind of form of organization. If we are getting income from different sources, or whatsoever reason may be there, we are getting income, whether one party is losing or one party is getting forfeited his shares, or we are getting income out of it, that is also a income of a company or income of a person through a negotiation. If the assessee gives cash or in kind from the following central government or the state government, any authority or body of agency, it will be treated as income, like subsidy, grant, cash incentive,
duty drawback, waiver or concession or reimbursement. There may be different subsidy or grant reimbursement if an institution or trust through central government or state government, that is also treated as income. But the subsidy or grant in actual, however, if such subsidy or grant reimburse is taken into account for the determination of actual cost of asset, it will not be treated as income. And the subsidy or grant by the central government for the purpose of corpus of a trust, कार्पस फंड होता है किसी ट्रस्ट का, उस कार्पस फंड में अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू to the institution or the trust established by the central government or the state government, that will not be treated as an income. So when it is be treated as income, when it is in cash or in kind for the particular specific benefit, that is. But in case of LPG subsidy is not be treated as the income because in a customer pays in advance full amount of that gas cylinder and then get some income back. That's why it is not income. Subsidy, LPG subsidy or other welfare जो subsidies हैं received by individual shall not be included in income. Okay. Now there may be another form of income, any sum of money or value of property received without consideration or for adequate consideration by any other person from any other person after or on 1st April 2017. So there may be any buying and selling of property or consideration or maybe inadequate consideration, or if any income is received by a person in this form, this can be treated as income and taxable under Income Tax Act. Compensation or other payment or dues received by any person in connection with the termination of his employment or modification of terms and conditions relating to thereof. There may be a set of conditions or modifications in the employment terms and conditions, and that benefit can be treated as income, or compensation amount can be treated as income of that person. Then there is a fair market value of inventory as on the date on which it is converted into or treated as capital asset with effect from assessment year 2019 and 20. If a person has a special income out of increase in value or appreciation in the value of stock, is treated as income as fair value of that income, or the difference of advantage will be treated as income of that particular person. Now it is the different form of income which a person has different forms. When a person can be an individual, a person can be an partnership firm, a person can be as a company, a person can be as association of person, or person can be as body of individual, or an artificial person created by law can be a person, or any person created by any act like Cooperative Society Act or cooperative consumer cooperative society, or any form of organization which has a specific identity in the law, in the eyes of law, or different forms of organization can be treated as person. So under income tax, person is defined very broadly, and it includes different forms of organization as well as individuals or association of person. Then there may be concept of income. Why income tax department tax on income? There is a reason for that. Because government of India have to bear so many big expenditures
or heavy expenditures on welfare of the state or welfare of the country and welfare of its people, for good governance, for better governance, and for better facilities like roads, dams, electricity facilities, transportation facilities like railway, bus facilities, or there may be some kind of safeties and there some kind of protection from invaders or wars between countries, and there is a need for defense, there is a need for forces like air force or navy, and there may be need for paramilitary forces, there may be need for some kind of police or some kind of home ministries to protect their countries, and that kind of services need some kind of expenditure, or that kind of expenditure are borne by the different taxes to be charged on common public. There may be form of taxation like direct taxation or indirect taxation. Direct taxation में if assessee is has to pay that kind of tax on his income or any form of income, whether it is wealth tax, the person who is getting some benefit of that income or wealth, or particular limit is crossing, specific limit is crossing, then income tax is chargeable on that particular person, and income is used for the benefit of that particular person, and he has to pay tax on that income, whether it is income tax, direct tax, wealth tax is also a direct tax, and there is a second part is indirect taxation, like goods and service tax is also a indirect tax. First it is imposed on the particular wholesaler or manufacturer or trader or retailers, then ultimately it has to be paid by the consumer. So it is the burden of tax is transferred on the next one ladder of the ultimate user, that is customer. तो जिस टैक्स का बर्डन हम दूसरों पर डाल सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी जो है, उसका बर्डन जो है दूसरे इंडिविजुअल पर डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड दैट इज़ पेड बाय indirectly the person who is liable to pay, but it is burden is being transferred to the another person or the down to that ladder or the ultimate user of the that product, or you may call it a ultimate consumer has to pay the goods and service tax. Ultimately it may be in form of state GST or it may in form of central GST. That's why there is two forms of taxation, direct tax and indirect taxation. But in income tax, concept of income is defined not properly, but in some kind of aggregation there is a need for inclusion of that kind of income. That kind of income will be treated as income in Indian Income Tax Act from different sources of income, if it includes some other receipts also, which is an ordinary treated as income. And in fact income means a monetary income which is derived from the definite source with some sort of regularity or expected regularity. There should be regularity in income. Like salary earners get salary from the employer every month, and there is a regularity in payment, and there is a 12 months that he is getting salary, so there should be regularity of earning income. These definite sources of income as salary, as we discussed earlier, income from house property, profits and gains of business or profession, capital gains, and income from other sources. Besides having some important rules of income, there is a major interesting focus on that kind of aspect also, which is as under, there should be a definite source of income. For income tax purposes, we can charge a tax on income which has a regularity,
which has a regularity and there is a source of definite income, or definite source of income should be there. There should be a definite source of income, and secondly, an income earned whether illegally or illegally. इनकम किसी भी प्रकार से कमाई गई हो, चाहे वो कानूनी तौर पर वैध हो या अवैध हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगा. That is another aspect कि what kind of source of income is there, whether it is legal or illegal. The Income Tax Act does not make any distinction between legal and illegal income. However, any expenditure incurred on income to earn an illegal income is allowed to be deducted out of such income only. Then it is not necessary that income should be received regularly or periodically, say weekly, monthly or quarterly. There may be lump sum received of income, or there may be lump sum income earning, like income from lottery, that is a lump sum amount, or income from any permanent source of income by sale of property, or so extraordinary sale of property, extraordinary price of the property, or extraordinary increase in the price of the gold, like now there is a 57,000 per 10 kg, और एक तोले के 57,000 के आसपास मार्केट प्राइस जो है चल रहा है. और that if some person have some gold and that is getting income out of it by selling his gold in form of coins or in form of bricks or in form of any kind of gold, that income can be generated by selling it, or that extraordinary income may be received in form of lump sum amount, or that may be treated as income of that assessee. So lump sum amount received in form of some benefit of 7th pay scale may be benefit of 7th pay scale may be there, or it the only meaning is that whether we are getting income from month wise or week wise or getting day by day income, a lump sum amount can be treated as income, or income tax is charged on that income. Then there is a income should be received from outside. It doesn't mean that we are earning income from our territory or our domestic territory or in Indian territory. There may be income from foreign, income from abroad, income from agriculture land in the abroad, income from a hotel in business in the Canada or England, or any form of income from that particular country. There may be income from salary, income from house property, income from capital gain, or income from agriculture land, income from other sources, income from lottery, income from winning horse races in foreign countries or any specific country. So you may call it that income should be earned from outside, or maybe outside, it is treated as income of that particular person. It is different part of that income and expenditure may be trade off. There may be expenditures on that particular income, or that expenditure may be deducted from that income, and the excess of that income or expenditure will be treated as income from outside India and will be treated income taxable in India as per Income Tax Act. There is a need for determination of residential status also, whether that person is residing in India in that particular assessment year or that particular financial year or in the previous year. If person is living previous year and earning income in that previous year, that should be treated as resident, non-resident or not ordinary resident in India. Accordingly, their tax liability or tax burden or tax की जो determination है, that will be decided on the basis of his residential status. In the later on, we will discuss residential status of an assessee, and there is some conditions or some legal conditions that should be satisfied by the
SSC. Okay, that is the later part of that chapter. Then there is a need for it. It is not essential that income must be received in form of money. There may be receipts in kind or service having income from different kinds. So, in form of income, the income tax department also considers some in kind or in commodity or in properties or in form of machinery or equipment or car or any in kind of income, or whether it is in form of money or whether it in any kind. किसी प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है, किसी प्रकार की कॉमोडिटी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, और किसी भी फॉर्म की इनकम हो सकती है, नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ मनी or in form of currency or in form of any benefit that we are getting out of the receipt, or there may be receipt in or in kind. कोई इनकम रिसीव में हो सकती है तो वो मनी की फॉर्म में आएगी, और मनी के अलावा भी कोई अगर हम बेनिफिट ले रहे हैं, कोई कंसिडरेशन ले रहे हैं, कोई काइंड में वस्तु की फॉर्म में, कमोडिटी की फॉर्म में कोई इनकम कमा रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज इनकम एंड दैट इज आल्सो चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट. देन देयर इज ए टेम्परेरी और परमानेंट इनकम. इफ इनकम इज getting different sources or particular sources, whether it is temporary or permanent, it is immaterial from tax point of view. So income is taxed on that particular income, whether it is temporary or whether it is permanent. Then if an assessee has earned income but it has not actually received it, and it will be treated as income of the assessee or being entitled to receive it. That is deemed income. Income is not received now but deemed to be received in near future, or maybe in his account or in his custody. So assessee has to pay income on that kind of income. Income tax पे करना पड़ता है. Assessee has to pay income tax on that income. Then if an assessee is getting reimbursement of expenses, that is not treated as income, because reimbursement is getting in form of payment which has already paid by the assessee from his pocket, and then he is getting that expenses to be reimbursed from the account or particular employer. That should be not treated as his income. Reimbursement of expenses or reimbursement of actual traveling expenses is not be treated as income of that assessee. Then under a legal obligation, a charge is treated as or created on income of a person, then the extent of such charge will be deducted from his income. तो जो भी खर्चे होंगे उस इनकम से घटाए जाएंगे, और कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगी, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, अगर उसमें कोई खर्चा हुआ है, एडवोकेसी की है, एडवोकेट को फीस दी गई है, तो उस फीस की इनकम को, फीस की जो खर्चे हुए हैं उसको पर्टिकुलर इनकम में से माइनस करके बची हुई इनकम पे टैक्स लगेगा. बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर दैट पर्सन कम्स अंडर दी टैक्सेबल लिमिट ऑफ दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लिमिट है, और उस लिमिट से ज़्यादा अगर इनकम कमा रहा है, जैसे पहले 2.5 लाख की इनकम थी, फिर नाउ 3 लाख की लिमिट बन चुकी है इस साल से, तो इनकम टैक्स जो 3 लाख से ज़्यादा कमाएगा उस कोई इनकम टैक्स पे करेगा. 3 लाख तक जो इनकम कमा रहा है कोई भी पर्सन, उसको टैक्स पे नहीं करना है, दैट इज़ एग्जेम्प्टेड और नील टैक्स होगा उसका. और लेटर ऑन वी विल डिस्कस डिफरेंट रेट्स ऑफ इनकम एज पर देयर स्पेसिफिक लिमिट. देन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा, गौशाला एट्सेट्रा इज नॉट इनकम. अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा और गौशाला के नाम पर कोई इनकम कमा रहा है, रिसीट ले रहा है, दैट इज नॉट रेटेड एज इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. पिन मनी रिसीव्ड बाई वाइफ फॉर हिज और हर
personal expenses, small savings made by a woman out of money received from her husband for meeting household expenses not his or her income. किसी भी महिला के द्वारा उसके पति से प्राप्त हुई जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को बेयर करने के लिए, पर्सनल खर्चे को बेयर करने के लिए जितनी भी पिन मनी या पॉकेट मनी उसको दी जाएगी, उस पॉकेट मनी से या पिन मनी से वो अपने खर्चे करेगी। अब वो इनकम जो है उस वुमेन की, इस लेडी की इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी, इनकम नहीं मानी जाएगी। दैट इज जस्ट टू बियर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस और दैट इज पिन मनी रिसीव्ड बाय ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। Then disputed income. Any disputed income or title of that income will not be postponed or held up to the assessment of such income. जब तक किसी व्यक्ति की उस इनकम से एंटाइटलमेंट फाइनल नहीं हो जाती, जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, या उससे जो आने वाला किराया है उस किराए की इनकम किसकी मानी जाएगी। अगर पिताजी के नाम वो दोनों मकान हैं और दोनों बेटे या तीनों बेटे उस मकान में रह रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा मकान है, एक्स्ट्रा कमरा है, एक्स्ट्रा रूम सेट है, उसको किराए पे दे रखा है, जब तक उन तीनों में फैसला नहीं हो जाता तब तक वो इनकम जो है पापा की इनकम मानकर उसको पापा के अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज़ जो डिस्प्यूटेड इनकम होगी उसका एंटाइटलमेंट जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक वो उस पर्सन की इनकम नहीं मानी जाएगी जो लड़ रहे हैं। डिस्प्यूट जिस पे हो रहा है, जिसमें आपस में लड़ाई हो रही है कि मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरे मकान का किराया, मेरे मकान का किराया, मेरे मकान का किराया, क्योंकि मकान तो पापा का है, पापा ने कमाया है, पापा ने कमाई से बनाया हुआ है। और अगर पापा उसको डिस्प्यूट को सेटल कर देते हैं तो तीनों की मकान की कमाई जो है अलग अलग अकाउंट में जाएगी, अलग अलग रेंट जो कमा रहे होंगे उनसे इनकम आएगी, या एक कंप्लीट मकान से जितना किराया आएगा, जैसे 15,000 रुपये किराया आ रहा है तो तीनों भाइयों में 5-5 हज़ार रुपये बाँट कर इनकम दे दी जाएगी। उनके 5-5 हज़ार रुपये जो है इनकम टैक्स में चार्जेबल होंगे अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो। ओके, दैट इज़ डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम में जब तक टाइटल अल्टीमेट ऑनर को नहीं जाता तब तक वो इनकम उसी को मानी जाएगी जिसकी है, और जब डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तब उनकी ऑनरशिप उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो इनकम जो है इक्वली या जैसे पेरेंट्स कहेंगे उसके हिसाब से बटेगी। और देयर में भी डिफरेंट डिस्प्यूट्स बाई ऑन प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड में भी देयर, और सम असेट्स में भी देयर, और सम शेयर में भी देयर। तो जब तक एंटाइटलमेंट जो है, एंटाइटलमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ दैट इनकम नॉट गोज टू द अल्टीमेट assessee, that should be treated as disputed income. Then diversion of income versus application of income. Diversion of income means that the income is diverted from some other person under some legal obligations. There may be diversion of income, जैसे एक दादाजी हैं, उसकी पुत्र वधू हैं, पोते हैं, बेटे भी हैं, उन सब को वो इनकम का हिस्सा दे रहा है। ज़मीन में से जितनी इनकम आई है, किराया आया है या रेंट की वैल्यू आई है या एग्रीकल्चर इनकम आई है, जब तक वो जितनी भी इनकम डाइवर्ट करता है, जितनी इनकम डाइवर्ट हो जाएगी, लीगली डाइवर्ट होगी, तो उसको हम डाइवर्टेड इनकम मानेंगे कि कितनी किस खाते में ट्रांसफ़र हुई है। बेनिफिट ऑफ द स्पाउस हुआ है, बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल हुआ है, बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड हुआ है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हुआ है। तो दैट इज़ ए डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जो इनकम कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, अल्टीमेट उसको ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि ये इसने इनकम कमाई है और खर्च करी है। इसलिए देयर इज़ ए टू काइंड्स ऑफ फॉर्म ऑफ इनकम दैट कैन बी डाइवर्टेड और ट्रांसफर्ड if that income is applied by the assessee to use it, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम जब होगा तब हम उसको मानेंगे कि वाकई में उस असेसी की वो इनकम है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस और फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर दैट इनकम इज अर्नड बाय द पर्टिकुलर पर्सन और असेसी और नॉट।
और देन नेक्स्ट द इनकम में भी प्लस और माइनस, दैट इज़ वेरी टेक्निकल, वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम जो है पॉजिटिव भी हो सकती है जितनी इनकम कमा रहे हैं, और इनकम जो है नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे शेयर मार्केट में लॉस हो गया तो लॉस फ्रॉम डिविडेंड, लॉस फ्रॉम शेयर मार्केट या डिविडेंड जो है नेगेटिव हो जाएगा। हमारी कैपिटल की एप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन हो गया है। एप्रिसिएट होना चाहिए तो डिविडेंड कमाना चाहिए था, लेकिन हमने डिविडेंड कमाया नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा लॉस कर दिया ड्यू टू डिक्लाइन इन द शेयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विच वी हैव परचेज ए पर्टिकुलर शेयर ऑफ ए कंपनी और पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी और मैनी कंपनी शेयर वी हैव टू परचेज और वी हैव मेक सम पोर्टफोलियो फॉर दैट बेनिफिट। बट इफ वी getting loss, that is income from that particular source is minus income, or we are getting some profit or gain from that income, that is minus income, plus income। गेन कर रहे हैं तो प्लस है और लॉस हो रहा है तो माइनस। तो माइनस इनकम मीन्स लॉस, और लॉस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम और उस लॉस को हम उसमें से पर्टिकुलर हेड में से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो है हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरे कोर्सेज के इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के। देन ग्रॉस टोटल इनकम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट अंडर सेक्शन 80B सब सेक्शन 5। द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। अब वो हेड मैं आपको बता चुका पहले कि दैट फर्स्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेडिंग इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज profits and gains in of business or profession, and fourth one is capital gains, and fifth one is income from other sources। तो aggregate of all or total of that income is treated as gross total income। If we deduct some deductions under section 80CC to 80U, that becomes total income। If we deduct some deductions under section 80CC to 80U from the gross total income or total of the 5 heads, that is gross total income, and we deduct deductions under section 80CC to 80U, there are some special deductions we will discuss in the chapter deductions from 80CC to 80U। और वो डिडक्शन घटाने के बाद माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी हम उसे टोटल इनकम कहेंगे। और टोटल इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में डिफाइन है और बताया गया है। द टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग डिडक्शंस अंडर 280U फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। देयर इज अ ग्रॉस टोटल इनकम। The first difference is aggregation of various heads of income is called gross total income, which we have already discussed with you, and after deductions under section 80CC to U the balance is called total income। gross total income में से हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80CC to 80U माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसे हम टोटल इनकम कहेंगे। इसी टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। इसी इनकम पर हम स्पेसिफिक रेट से टैक्स लगाएंगे। देन देयर इज ए ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंडेड ऑफ। जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसको राउंड ऑफ नहीं करते, बल्कि जो हम टोटल इनकम होती है हमारी उसको राउंड ऑफ करते हैं 10 रुपये के राउंड ऑफ में। टोटल इनकम इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। एंड देन थर्ड डिफरेंस इज टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगता। ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर जब हम 80CC to 80U की डिडक्शन घटाएंगे वो मैक्सिमम जो है 1,50,000 तक हम घटा सकते हैं। उसकी मैक्सिमम लिमिट है घटाने की 1,50,000, और वो घटाने के बाद जो बचेगा उस पर हम टैक्स लगाते हैं। दैट्स वाई टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। फोर्थ डिफरेंस इज ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन द टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से ज़्यादा से कम नहीं हो सकती। ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से
कम नहीं हो सकती। मीन्स उसमें इधर डिडक्शन घटाएंगे 1,50,000 मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1,50,000 तक भी जा सकती है। और उसके घटाने के बाद जो बचेगा वो टोटल इनकम टैक्सेबल होगी। इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल इनकम और मे बी समवेयर इक्वल टू, बट सम टैक्स प्लानर advises to the assessee always, or assessees also play an important role to minimize his total income, to reduce his tax burden, or to minimize his tax or manage his tax in a systematic manner as per legal formation or legal obligation of the Income Tax Act 1961. That's why every assessee get advantage of under section 80cc to 80u up to 1,50,000 deduction. The next concept is casual income. Casual income, as we have discussed earlier, any receipt or which is an agriculture or non-recurring nature in actual casual income may be defined as that income the receipt of which is accidental or without any stipulation, or it is in nature of unexpected windfall. लॉटरी खेलने से टिकट परचेज कर लिया और इनाम जीत गए, ये लॉटरी विन कर ली, या कार्ड गेम आप जीत गए, हॉर्स रेस की बैटिंग आप जीत गए, या कोई भी कंटीजेंस जो अचानक से हमारे पास इनकम की फॉर्म में आ जाती है, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे डायरेक्ट उसमें होनी चाहिए, तब जाके हम उसकी इनकम को मान सकते हैं कि हम इनकम जो है अर्न कर रहे हैं। तो कैजुअल इनकम में बी ऑफ फ्रॉम unexpected windfall. There should be a specific source of that income, that is a casual income. Casual income जो है winning from lotteries, crossword puzzles, card games और other games of any sort, और शॉर्टिंग से हम गेम जीत सकते हैं और इनकम कमा सकते हैं। फ्रॉम गैम्बलिंग, कोई गैम्बलिंग का गेम हो सकता है, और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर whatsoever, or casual income is treated as windfall winning. Receipts even from habitual betting or non recurring receipts and assessable as income to be treated as in the casual income. Casual income में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता? Casual income does not include capital gain. शेयर मार्केट में हम शेयर बेचने से जो गेन, शेयर खरीदने और बेचने से जो लाभ होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। उस कैपिटल गेन को हम कैजुअल इनकम में शामिल नहीं कर सकते। और रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, किसी भी बिजनेस से, प्रोफेशन से या कोई ऑक्यूपेशन से जो हमारा रूटीन का वर्क है, उस रूटीन वर्क में जो बिजनेस से एक्टिविटी से जो हम रिसिप्ट कमाते हैं उसको भी हम कैजुअल इनकम में नहीं लेते, कैजुअल इनकम नहीं मानेंगे उसको। द रिसिप्ट और बाई वे ऑफ एडिशन टू रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉई सच एज बोनस, ग्रेचुइटी और परक्विजिट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट, और एम्प्लॉयर ने खुश होकर कोई आपको इनाम दे दिया, प्राइज़ दे दिया, या एम्प्लॉयर ने खुश होकर आपको कोई एप्रिसिएशन दे दिया, दैट इज नॉट बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। देन वॉलंटरी पेमेंट्स रिसीव्ड बाय एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। कोई टिप्स दे दी, जैसा ऑलरेडी डिस्कस किया, या कोई गिफ्ट दे दिया किसी प्रोफेशन में, लीगल सर्विसेज में, दैट इज़ योर प्रोफेशन एंड यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी इनकम, ना कि कैजुअल इनकम में आएगी। और गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स और इज़ नॉट इनकम एट ऑल। किसी बर्थडे पे, वेडिंग पे अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव कर लिया तो दैट इज़ सिंपलेस्ट इंस्टेंस इन पॉइंट, और दैट इज़ नॉट ए कैजुअल इनकम। तो इट शुड बी ट्रीटेड इन द गिफ्ट, उसमें गिफ्ट में मानी जाएगी। और गिफ्ट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वाला गिफ्ट है, कोई डायमंड है, ज्वेलरी का गिफ्ट है, कोई प्रीशियस मेटल से बना हुआ कोई गिफ्ट है और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस हैं, तब उसको हम इनकम फ्रॉम वेल्थ में ले जा सकते हैं, लेकिन वो कैजुअल इनकम में ट्रीट नहीं की जाएगी। ओके, कैजुअल इनकम में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टिबल और सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड।
एंड देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें कैजुअल इनकम में हमेशा TDS कट जाता है। TDS जो है 30% अगर है तो 30% के हिसाब से अगर आपने 1 लाख रुपए की लॉटरी विन की है तो उसमें 30,000 रुपये TDS कट जाते हैं, लेकिन ना तो उसको राउंड ऑफ किया जाता है और ना ही उसको सेट ऑफ किया जाता है, और ना ही उसकी एक्सपेंसेस को उस, जैसे आपने टिकट खरीदा 100 रुपये का या 500 रुपये के टिकट खरीदे, 1000 के टिकट खरीदे और आपने 1 लाख रुपये विन किया तो 1000 रुपये जो एक्सपेंसेस आपने टिकट परचेज करने में किए हैं वो माइनस नहीं होंगे इसमें, उसकी 1 लाख पर ही हम टैक्स पे करेंगे और 30% जो है TDS कटेगा, और बाकी की जो 70% आइटम होगी वो आपको पे कर दी जाएगी। रेट ऑफ टैक्स जो है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसिस, गैम्बलिंग, बैटिंग इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%। और इस करंट असेसमेंट ईयर के लिए देर में भी चेंज और देर में नॉट बी, इफ देर इज अ चेंज वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन। ऑन एन एवरेज 30% जो है जो प्रिस्क्राइब रेट है वो टैक्स जो है कट जाएगा उसमें। तो देर इज ए स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन एंड देर इज ए जनरल रेट ऑफ टैक्सेशन। The rate of taxation is also important for discussion here. So we are discussing now person. person हमने बहुत डिस्कस कर लिया। person include the following: an individual, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन मानेंगे, और कंपनी को भी, फर्म को भी, एसोसिएशन पर्सन को भी, इंडिविजुअल को भी, कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, उसको भी हम इसमें एज ए पर्सन ट्रीट करेंगे। कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, कंटोनमेंट हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, और एनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय एनी लॉ और इंस्टीट्यूशंस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल or different forms of organizations may be there, it is treated as person under section 231, section 231 to subsection 31 of Income Tax Act 1961. There is a definition or meaning of person as defined in the Income Tax Act. Then there is assessee. An assessee means a person who is liable to pay on tax on his income. Who is liable to pay any tax on his income is assessee. Who is liable to pay any sum of money under this act, like interest may be there, penalty may be there, in respect of whom any proceeding is going to be under this act is taken as for the benefit of his income or assessment of his income or assessment of fringe benefit is there. So any person is getting some income or who is treatment or assessment is going on behalf of that person is also assessee in Income Tax Act. In respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment of his income or of any other person, or in respect of he is assessable, किसी person को assessment करने के point of view से जो प्रोसीडिंग चल रही होती है कानूनी तौर पर इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर वो उस प्रोसीडिंग के अंदर ड्यू है उसका टैक्स और कंप्यूटेशन करना, तब भी हम उसको इनकम टैक्स का असेसी मानेंगे, चाहे वो उसकी टैक्सेबल लिमिट में आए या ना आए। अगर आ जाता है तो वो उसका असेसी मानेंगे, अगर वो उस लिमिट में नहीं आता है, उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है, टैक्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं आती, तो वो उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे या उसको बाहर निकाल देंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से उसको असेसी नहीं मानेंगे। अदरवाइज कोई भी प्रोसीडिंग उसके नाम चल रही है, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक उसको असेसी मानेंगे। जब वो प्रूव हो जाएगा असेसी है तो उस पर टैक्स लगा देंगे। हु इज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ बिन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड, और कोई ड्यू हो सकता है, रिफंड हो सकता है, या उससे रिकवरी हो सकती है। अगर कोई ऐसी प्रोसीजर उसके बिहाफ पर चल रही है देन इट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज असेसी एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 2 और 7 सबसेक्शन 7 जो है असेसी को डिफाइन करता है। एंड देयर में बी डीम्ड असेसी, हु इज़ डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और हु इज़ डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई प्रोविजन उससे रह गया, कोई ट्रीटमेंट उससे गलत हो गया, उससे असेसमेंट सही नहीं भरी गई है, तो उसको असेसी इन डिफॉल्ट हो सकता है और डीम्ड असेसी हो सकता है। Then there is a deemed assessee. A person who is deemed to be assessee on behalf of some other person is called a deemed assessee. Like after death of a person, his legal representative will be treated as is deemed assessee.
और रिप्रेजेंटेटिव फॉरेनर और माइनर और ल्यूनेटिक के केस में भी जो उसका डिपेंडेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका असेसी माना जाएगा। और असेसी इन डिफ़ॉल्ट ऐसा पर्सन, ऐसा असेसी जो किसी भी पेमेंट को, ड्यूज़ को या टैक्स की लायबिलिटी को पे करने में कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है या अंडर पेड करता है या फिर टैक्स की इवेजन करता है, टैक्स की चोरी करता है या टैक्स को छुपाता है, टैक्स की अवॉइडेंस करता है, तो दैट इज़ पर्सन इज़ कॉल्ड असेसी इन डिफ़ॉल्ट। या जो समय पे टैक्स नहीं पे करता या टैक्स की अमाउंट प्रॉपर नहीं पे करता या अंडर पेड करता है टैक्स को, दैट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज असेसी इन डिफ़ॉल्ट और डीम्ड टू बी असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसमेंट ईयर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जो है ये इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर को डिफाइन करता है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on the first day of April every year and ending on 31st March of the next year। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये असेसमेंट ईयर माना जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर है वो इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पिछले साल जो प्रीवियस ईयर बनता है,